A circular coil of 20 turns, n की वैल्यू दे रखी है 20. A circular coil of 20 turns and radius 0.1 meter, 10 centimeter दिया हुआ है, that means 0.1 meter, is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla, normal to the plane of the coil. Okay, normal to the plane of the coil, like the field is perpendicular to the coil. ठीक है, तो प्लेन ऑफ द कॉइल और फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्रीज. इफ द करंट इन द कॉइल इज 5 एम्पियर, करंट इन द कॉइल इज 5 एम्पियर, what is the total torque on the coil? First part, this is important. कुछ क्वेश्चंस जो बिना कैलकुलेशन के भी आंसर किए जा सकते हैं, विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला, विदाउट showing the calculations, we can try to answer few questions. जैसे कॉइल अगर फील्ड के पैरेलल है, फील्ड के पैरेलल, तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होगा, और अगर फील्ड के परपेंडिकुलर है तो टॉर्क एक्ट नहीं होगा. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला normal to the plane of the coil. The field is perpendicular to the coil, तो फिर टॉर्क अगर कॉइल परपेंडिकुलर हो फील्ड के तो टॉर्क कितना हो गया 0. ठीक है. Then we have second part, what is the total force on the coil? डायग्राम अगर आप लोगों को याद हो, that's magnetic field, we place a coil, इन पर फोर्सेस ऐसे एक्ट होंगी, करंट लिया था इस तरह, और इन दोनों एंड्स पर फोर्स इस तरह से एक्ट, ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, ये दोनों भी इक्वल और अपोजिट है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल विल आल्सो बी 0. ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल विल आल्सो बी 0. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. टॉर्क 0 होगा बिकॉज द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. Force 0 होगी because the coil is under the action of 4 different forces. These two are equal and opposite, so their sum will be 0. These two are also equal and opposite, their sum will also be 0. So the net force acting on the coil will be 0. And the last part, the third part, the average force on each electron in the coil due to the magnetic field. The coil is made up of copper of cross-sectional area. The coil is made up of copper of cross-sectional area 10 raised to power minus 5 meter square, and free electron density of copper is given, small n is given 10 raised to power 29 per meter cube. What's the average force on each electron? We need to find. Yes, तो जरा ध्यान दिया जाए. Force acting on electron Q will be sin 90. कॉइल अगर फील्ड के परपेंडिकुलर है तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम, आप इनकी मोशन चेक कर सकते हैं, सबकी इट्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड. एवरी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड. तो अगर ऐसा है तो फिर थीटा 90 होगा और साइन 91. ठीक है. I इक्वल टू EN AVD, drift velocity. ये भी velocity of electrons, that's also velocity of electrons. V अगर निकाल ले ENA और इसे यहाँ प्लेस करते हैं फर्स्ट में, तो F विल बी इक्वल टू Q I by ENA into B. Q द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया IB by NA. How much is I? 5. B 0.1,
that's 10 is to power 29, area 10 is to power minus 5. The force comes out to be 10 is to power minus 25 Newton. Force on each electron. Every part of the question is very important. The first two parts, of course, based on particular concept. Since the coil is held perpendicular to the magnetic field, torque acting on the coil will be 0. The four parts of the coil, length and width, the four sides of the coil, they experience forces which are in opposite direction and equal in magnitude. So net force on the coil will be 0. How to find force on each electron? We find the number of electrons, that's one of the ways, but that's an easier way. Force acting on each electron is QVB sin theta. All electrons, they are moving perpendicular to the field. ये हमें यहाँ से समझ में आता है. Field अगर इधर है and the coil is placed perpendicular to the field, so every electron that's moving through the coil, either clockwise or anti-clockwise, is actually moving perpendicular to the magnetic field. तो फिर थीटा 90 हो गया. ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है. I इक्वल टू ई एन ए वी डी. वेलोसिटी निकालकर यहाँ प्लेस कर दी. चार्ज क्यू ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो गए.